Welcome to Toddler Tuesdays. Hi everyone, I hope you're enjoying these toddler recipes. Today's recipe is very fun, very easy and it's sweet. Yes, today I'm making a porridge but with my own yummy twist in it. It's the fruit and nut porridge. Now the best part about this recipe is, of course, you can make it fresh and feed it there and then, which is the best part being breakfast time. But you can also make this the night before and call it the overnight oats. They taste really yummy the next day also. Okay, let's talk more work. Let's begin with the recipe. Just putting a saucepan on and I'm going to toast some oats and some almonds in it. Now oats are really fibrous and they give a nice boost of energy to children, so they're really amazing for a morning start. Alright, along with this I'm going to add some chopped almonds and let them toast a bit. I want a nice nutty flavor. Okay, अब ये nice भीनी भीनी खुशबू आ रही है. इसमें अब मैं डाल दूंगी दूध. बच्चों के लिए you can use nice full fat milk. There's absolutely no harm. It's good fat and it's good for them. बस इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाए, इसके बाद मैं इसमें डालूंगी वो fruit. What is this porridge that we are making? Fruit and nut porridge, right? तो क्या fruit डाल रही हूँ? I am putting apple. Now don't panic. I know काफी बच्चों को apples पसंद नहीं है, लेकिन आप अगर porridge में डाल के उन्हें देंगे ना, they will absolutely love it. अब इसमें मैं डाल दूंगी हमारे ये chopped apples. इसे थोड़ी देर हम पकने देंगे ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाए एप्पल, बट वी स्टिल वांट अ लिटिल बाइट. अगर आपके बच्चों को बिल्कुल एप्पल पसंद नहीं है, देन कुक इट अ लिटिल लॉन्गर एंड एप्पल्स को थोड़ा जल्दी डाल दीजिए ताकि वो अच्छे से मिश मैश हो जाए एंड दे जस्ट मिक्स इन विद द ओट्स. Okay, lovely. These apples are almost done. They'll provide a nice crunch to our porridge, right? So now, last but not the least, I'm going to add in some berries. So I have some blackberries and some cranberries जिसे मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं. आप रेगुलर किशमिश भी डाल सकते हैं, आप डेट्स के पीसेस भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है आप वो भी डाल सकते हैं. Like I always say, recipes are just a guideline and then you can use your own creativity, your own preferences and alter it to your taste. Okay, lovely. This is done. अब बस फ्लेम बंद कर देंगे and then I'm going to add in some honey. Now अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, 2 साल से नीचे हैं, 1 साल के नीचे तो बिल्कुल हनी नहीं देते हैं, पर अगर 2 साल के भी नीचे हैं तो यूजुअली हनी इज अवॉइडेबल. तो आप तब गुड़ यूज़ कर सकते हैं या रेगुलर चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, केन शुगर यूज़ कर सकते हैं, रॉ शुगर यूज़ कर सकते हैं. थोड़े बड़े बच्चों के लिए आप हनी यूज़ कर सकते हैं. ऑलराइट, सो अब इसे मैं थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी and then I'm going to do the final presentation. Ta-da! This is an empty apple and इसके अंदर से जो एप्पल निकला था वो ही इस porridge के अंदर गया. So एप्पल बहुत जल्दी ब्लैक हो जाते हैं, तो what you have to do is जैसे ही आपने वो कोर किया तो उसमें हल्का सा चीनी और नींबू लगा दें, very little नींबू. So now I'm going to pour this porridge. Lovely. And here you go. It's ready. Doesn't it look beautiful? अब आप इसे अगर अपने बच्चों के सामने रखेंगे तो they are going to literally pounce on it. So do try this fruit and nut porridge recipe. Trust me, your children are going to love it. And now, last parting lines. Don't forget to like, share and subscribe to Amrita, Raichand, Chef and Beyond for more exciting recipes just like this. I'll see you next Tuesday. Bye-bye.